Appreciate what you have before time makes you appreciate what you had. Hello and welcome to your English class. Today we are going to start the first short story, that is The Lost Child. The thought is very much appropriate, or I would say very much relatable to our story today. The story, The Lost Child, is written by Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand was born on the 2nd of December 1905. He was an Indian origin writer. He was awarded with the Padma Bhushan, and he depicted the lives of the poorer caste, and in a very the poorer caste in the Indian traditional society in a very beautiful manner. And this story of ours, The Lost Child, as the name suggests, talks about the protagonist in the story is a small child of 5 or 6 years, and the story is being set up in the spring season, Basant Ritu mein, and in the villages where they are fair का मतलब मेला, जब मेला लगता है बसंत ऋतु में, तो people are very much happy, and people are all decked up, and they are going to the fair by different means. And in villages, these fairs, they hold a very they hold much importance in the lives of people, because in city lives we are having malls, and we're having different shops, but there their medium of getting so many things at one place is this fair only. So the child over here, he was very much happy, extremely happy to go to the fair. His parents are taking him to the fair, and he's very happy. He's a little child of 5-6 years, and he's being happy. He's being naughty at the same time. His joy knows no bounds, and he's very happy. It's very difficult for his mother to control him, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं and उनको आप ऐसी किसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे उनको पता है कि बहुत सारी चीजें एक जगह मिलेंगी, and everything will be of their interest only, so they will be very much happy. So here he was very much happy, and उसके जो parents हैं, their personalities is quite different. The dad is very much strict, and on the other hand, mom tries to maintain a balance between the son and the father. And the first 2 pages, in the story, the author in a very beautiful way describes the beauty of nature. वो बताते हैं कि कितना खूबसूरत, कितना अच्छा उस टाइम पे वो सीन है जब मेला लग रहा है. And the description will make you, if you read the story, you will understand, you will feel as if you are there only in the fair, and आपको ऐसा लगेगा that आप वहीं पर हो, आप उस चीज को महसूस कर पा रहे हो. A very detailed and a very realistic description of nature is being given by the author. And Mulk Raj Anand further talks about a narrow road. एक गांव में एक छोटी सी गली है, and उसके आसपास सरसों के खेत हैं, and हवा चल रही है, खेत लहरा रहे हैं, and a beautiful smell of mustard seeds and mustard flowers is spread everywhere, and it's kind of engulfing the atmosphere. And there are butterflies, rabbits, and who are jumping from one flower to another flower. In the same manner, the child is also jumping because he was very happy. बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, जस्ट द फैक्ट कि उसके पेरेंट्स उसको मेले में लेके जा रहे हैं, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है. ही इज़ वेरी हैप्पी. तो जिस तरह से द ऑथर टॉक्स अबाउट द ब्यूटिफुल नेचर, कि सरसों के खेत लहरा रहे हैं, एंड मौसम बहुत अच्छा है, हर चीज़ इतनी ब्यूटिफुल लग रही है, गोल्ड की तरह वहाँ पे सब कुछ चमक रहा है. एंड बटरफ्लाइज भी हैं, रैबिट्स भी हैं, सब बहुत खुश हैं, सब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहे हैं. वैसे ही आपका ये जो बच्चा है छोटा, ये भी
घूम रहा है एंड ही इज वेरी हैप्पी, ही इज मूविंग अलोंग विद देम एंड it gives a very beautiful or you can say aroma and picturesque view. बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है एंड व्हेन वी मूव फर्दर जो बच्चा है वो बार बार अपनी मॉम का हाथ छोड़ के आगे भाग जाता है एंड उसकी मॉम बार बार उसको बोलती है बेटा साथ में चलो, क्योंकि वो इतना खुश है, ही इज वेरी एक्साइटेड, उसको लग रहा है कि किसी तरह से बस मैं मेले में पहुंच जाऊं एंड उसको बार बार बोलती है उसकी मॉम की बेटा हाथ पकड़ के चलो, छूट जाएगा हाथ, ध्यान से चलो, बिकॉज मॉम वॉज वेरी मच केयरफुल, उसका बहुत ध्यान रख रही थी उस वक्त वो, तो वो यही बोलती हैं उससे बार बार एंड ऑन द एंट्रेंस ऑफ द फेयर देयर इज अ ह्यूज गेट, बहुत बड़ा सा गेट, बहुत ही बिग गेट है जो फेयर का जो एंट्रेंस गेट है, उसके पास ही देयर इज अ ह्यूज ट्री, बहुत बड़ा सा पेड़ भी है वहां पे एंड उसके नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग एंड दे आर रिलैक्सिंग, क्योंकि जो फेयर लगता है विलेज में लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है दे गेट टायर्ड, सो दे आर सिटिंग ओवर देयर एंड दे आर रिलैक्सिंग, तो उसके पेरेंट्स भी वहां जाके बैठ जाते हैं एंड ये जो बच्चा है पेरेंट्स भी थोड़े टायर्ड हो जाते हैं वहां बैठ जाते हैं जस्ट टू रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, बट दिस चाइल्ड ही इज एक्सट्रीमली नॉटी, he doesn't want to stay, he was jumping jack at that particular point of time, jumping from here one place to another and he is so excited कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे होते हैं the some many of the flowers they fell from the tree and he starts picking up those flowers, वो उन्हीं फूलों को इकट्ठा करने में लग जाता है एंड वहां पे एक भंवरा भी आता है एंड एंड उस भंवरे को देख के, क्योंकि बहुत सारे फूल थे तो ऑब्वियसली भंवरा आएगा, तो उस भंवरे को देख के ही इज सो एनर्जेटिक, ही इज फिल्ड विद सो मच ऑफ पॉजिटिविटी कि उस भंवरे को देख के वो सोचता है कि आई शुड ऑल्सो कैच दैट भंवरा, मैं भी उसको जाके पकड़ लेता हूँ, ही ट्राइज टू कैच इट एंड अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, टिड्डा जिसको बोलते हैं, वो भी they were a group of dragonflies, it was hovering over there and like उसके ऊपर over him and he was so excited, वो डर नहीं रहा है उन सब से, he is very much excited that he is with nature, वो एक नेचर में इतनी ब्यूटीफुल चीजें वो अपने नेचर में देख पा रहा है, बटरफ्लाइज, रैबिट्स, ड्रैगन फ्लाइज, beautiful flowers, he was very much happy and he wants to be with the butterflies and with the dragonflies and he wants to just stay with them, he wants to be with them, he just wants to be with nature. तो यहाँ पे मुल्कराज आनंद he in a very beautiful manner elaborates the beauty of nature and when you will read the text you will understand, you will feel as if आपको लगेगा कि हम भी वहीं पर हैं, हम भी बटरफ्लाइज देख रहे हैं, हम भी ड्रैगन फ्लाइज देख रहे हैं, it's so beautiful and अब क्या हुआ कि अब इंतजार खत्म हो रहा था, फाइनली व्हेन ही एंटर्स द गेट ही वाज सो एक्साइटेड बिकॉज देयर वर मेनी शॉप्स and there was so much for him to do, many of the shops were there and he was very much excited and he doesn't know, वो इतना सारी चीजें देख के एक साथ उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं now what to take and जब वो घुसता है तो एंट्रेंस पे द फर्स्ट शॉप व्हिच ही गेट वाज ऑफ अ मिठाई वाला, देयर वाज अ मिठाई वाला एंड ही वाज शाउटिंग बर्फी ले लो, रसगुल्ला ले लो, एंड दिस लिटिल चाइल्ड ही इज वेरी हैप्पी and he says to his dad कि पापा मुझे बर्फी खानी है, अब पापा तो उसकी मॉम से बोलता है वो कि मम्मा आई वांट टू हैव दिस थिंग बर्फी, बट पापा उसके जैसे कि मैंने बताया ही वाज वेरी मच स्ट्रिक्ट, so he was like no need to buy the barfi on the first, like अभी तो हम आए हैं, अभी क्या जरूरत है खरीदने की, let's move forward and perhaps we will find something better, something interesting more than this मिठाई वाला, more than barfi. So वो उसको बड़े स्टर्न वे में मना कर देते हैं एंड बेचारे बच्चे का छोटा सा he feels very much sad and वो उदास हो जाता है, बट स्टिल चलना है, अभी तो फेयर शुरू हुआ है, हो सकता है कि आगे किसी चीज के लिए पापा मान जाएं, तो वो आगे बढ़ने लगते हैं एंड देन व्हेन ही मूव्स अहेड ही सीज अ हॉकर, उसको एक हॉकर दिखता है, वाज मेकिंग द गार्लैंड्स, वो गुलमोहर के फूल से वो गार्लैंड बना रहा था एंड he finds that garland, those flowers very much attractive and he wanted to have that also, that garland also
एंड अब क्या हुआ कि पहली बार पापा ने इतनी स्टर्न वे में मना कर दिया था, तो नाउ व्हेन ही वांटेड टू हैव दोस गार्लैंड्स इन हिज माइंड, he asked his father कि पापा मुझे ऐसा चाहिए, and he knows that his dad will not agree, and उसको अपने दिमाग में वो सोचता है कि अरे मैं पापा से मांगूंगा एंड पापा फिर मना कर देंगे, तो क्या फायदा उनसे मांगने का, तो वो अपने दिमाग में अज्यूम करता है. तो दिस टाइम ही कीप्स दिस his desire to his heart only, and he moves forward. अब आगे क्या होता है, उसके बाद एक शॉप आती है बलून की. ना balloons are very much attractive. Children gets attracted to these balloons because they are of different colors, different shapes, and they're very much attractive. So he gets excited and he wants to have those balloons as well. छोटा बच्चा है, फेयर में आया है, इतनी सारी चीजें देख रहा है, तो ऑब्वियसली उसका मन करेगा ये सब भी लेने का, बिकॉज बच्चा है, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसका मन करता है सब कुछ लेने का. ही वॉन्ट्स टू हैव एवरीथिंग. अब यहाँ पे बलून्स वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है उनकी तरफ. एंड फिर अगेन सोचता है कि मैं पापा को पूछूंगा, दिमाग में फिर अपने इमेजिन अज्यूम करता है कि मैं पापा को पूछूंगा तो पापा मुझसे बोलेंगे दैट तुम तो बहुत छोटे हो, तुम क्या करोगे बलून का, कोई जरूरत नहीं बलून की, तो वो फिर चुप हो जाता है. रिमेंबर उसने सिर्फ पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली, व्हेन ही वांटेड टू हैव दैट बर्फी, his father refused. That was the only conversation. After that he only assumed. वो अभी तक सिर्फ सोच रहा है अपने दिमाग में कि मैं पापा को पूछूंगा तो पापा ये रिप्लाई करेंगे. एंड उसके बाद क्या होता है कि he move forward. अब वो क्या हो गया है, आगे चल के अब वो बीच में आ गए हैं, अब वो फेयर के बीच में आ गए हैं, एंड वहां पे उनको एक जगलर मिलता है. जगलर्स जो बॉल्स को या बॉटल्स को, 2-3 बॉल को या 3 या 4 बॉल्स को एक साथ दोनों हाथों में घुमाते हैं, उनको हम जगलर्स बोलते हैं. तो वो वहां पे उसे एक जगलर दिखता है. अब ही एक एंड उसके पास ही उसको एक आदमी दिखता है जो बीन बजा के स्नेक से डांस करवा रहा था, फ्लूट बजा के स्नेक से डांस करवा रहा था. तो ही गॉट वेरी मच अट्रैक्टेड. उसको बड़ा मजा आता है उसे देख के, एंड उसको मन करता है कि कि मैं ये फ्लूट ले लूं, मुझे भी चाहिए ये, मैं भी बजाऊंगा. बट he assumes again regarding the refusal of his father, and उसको लगा कि मैं फिर पूछूंगा तो पापा फिर बोलेंगे कि आप तुमको जरूरत है फ्रूट की, तो वो मना कर देंगे, तो वो नहीं पूछता है. नाउ उसकी जो अब क्या है कि अब भीड़ है फेयर में, विलेज में फेयर लगता है तो जाहिर सी बात है वहां लोग ज्यादा आते हैं. तो he was his mother is telling him continuously to stay with her. हाथ पकड़ के चलो, ध्यान से चलो, खो मत जाना. एंड ही इज वेरी मच एक्साइटेड. उसको ये भी लेना है, उसको वो भी लेना है, he wants this thing also, he wants that thing also. He was very much excited. Then क्या हुआ, उसको वो बहुत एक्साइटेड था, वो बहुत खुश था. स्टिल ही couldn't get the things he wanted. his जो चाहिए था उसको वो नहीं मिल रहा था. वो खुश था, आया था फेयर में, लेकिन अभी तक उसको कुछ मिला नहीं था. एंड how these kids are, like kids are very they're very innocent, and when they go out at a place where they are having so many things, so they get attracted towards everything. They want everything. बच्चों को भी अगर आप मार्केट लेके जाओगे, इवन इफ यू हैव योर सिबलिंग्स हु आर वेरी स्मॉल, आप देखोगे कि उनको सब चाहिए होता है. एंड एज पेरेंट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बाय एवरीथिंग फॉर देम, क्योंकि हर चीज उनके फायदे की नहीं होती है. बट दीज किड्स दे डोंट अंडरस्टैंड. उनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए, नहीं मिलता तो वो उदास हो जाता है. तो यहाँ पे भी उस छोटे बच्चे का यही हाल था. एंड मूविंग फॉरवर्ड, जब आगे वो मिलने बढ़ता है, ही कम्स नियर अ राउंड अबाउट, एक झूला जो बड़ा वाला होता है उसके पास आता है. एंड दिस टाइम ही कुडंट कंट्रोल हिज डिजायर. He with a lot of strength, he finally asked his father that he wants to sit on the roundabout. मुझे बैठना है झूले पे, आप मुझे झूले पे बिठाइए. And to his surprise, there was no one. There was no answer at all. वो पूछता है roundabout के पास खड़े होके कि मुझे झूला झूलना है, and उसको कुछ आंसर सुनाई नहीं देता है. वो यहाँ वहां देखता है, उसको कुछ नजर नहीं आता है. And he shouts, मम्मा पापा कहाँ गए? And but he gets no answer. उसको कोई आंसर नहीं मिलता है.
then he's shouting for them, he starts shouting for them. वो अच्छा खासा आया था बेचारा एंड झूला देखने लगा एंड इतनी देर में पेरेंट्स कहीं चले गए उसको उससे मिस हो गए क्योंकि ये अपनी मॉम के संग नहीं चल रहा था, he's being negligent at the time. So उसको मतलब उसको समझ नहीं आया, वो चिल्ला रहा है मॉम डैड एंड कोई आंसर नहीं आ रहा है एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं ही रियलाइज कि मैं खो गया हूँ, नाउ आई एम लॉस्ट. And his eyes were moving here and there everywhere in the fair and he was shouting mom dad but koi answer nahi. Eventually he realized that finally I'm lost. I'm lost with my in this fair and my parents are nowhere to be found. And he starts crying, he starts running. Instead कि अगर भागूंगा तो शायद कहीं parents दिख जाएंगे. And आंसू गिर रहे हैं, धूल उड़ रही है, पहुंचता जा रहा है बेचारा and his face turned black because of dust and बहुत परेशान है. And then क्या होता है कि उसको एक temple, he sees a temple and he sees thousands and thousands of people are going over there as it was a religious place. So he thought ki my parents might have gone there as well. So he runs, he tries to climb the stairs of the temple, but it was very tiny, it was very small, and everyone over there was a giant according to him. Like they were very tall and he was a little child. And it was very difficult for him to go. And फिर क्या होता है कि there was too much rush over there and it was very difficult. And धक्का लग रहा है इस बेचारे को and then वो गिर जा रहा है, फिर भी बेचारा जा रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है. Still he was going. Then एक आदमी वहां पर आता है, he was a good man, उसको देखता है, he feels pity about him and वो उसको बोलता है कि बेटा where are your parents, कहाँ हैं तुम्हारे पेरेंट्स. he starts crying very loudly. वो बहुत जोर से रोने लग जाता है and उसको लगता है कि शायद यहाँ बहुत रश है तो मैं इसकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ. मैं एक ऐसी I should take him to a place where I can understand what he is trying to say. So he takes him away from that crowd and he asks where are your parents. So he says that he starts crying and he says he only starts crying and crying bitterly and saying मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, I don't want anything else, I want my parents back. And he asked him, he asked जो थोड़ा सा उसको just to make him happy, just to make him smile. वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें झूला झुला देता हूँ, वही चीज जो वो डिजायर कर रहा था. तो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें झूला झुला देता हूँ, तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, तुम थोड़ा सा अच्छा फील करोगे. तो मना कर देता है. He refused कि नहीं, I want my mom, I want my dad. And ironically in the story, this man, he takes him to all those places, all those shops, all those things he wanted to have earlier. वो मिठाई वाले के पास भी उसको लेके जाता है, वो बलून वाले के पास भी उसको लेके जाता है, वो फ्लूट वाले के पास भी उसको लेके जाता है. एंड द आंसर वाज द सेम, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट माय पेरेंट्स बैक. एंड बलून्स भी उसको वो बोलता है कि चलो तुम बलून ले लो, तो वो भी नहीं उसको. एंड देन द स्टोरी एंड्स अब्रप्टली. स्टोरी खत्म हो जाती है यहीं पे. It is having a very abrupt ending, but the message is very strong. As I have told, as I have started my lecture with a thought that appreciate what you have before time makes you appreciate what you had. Respect and value what you have right now. There are times where your parents are not able to give you the things you desire for. We are human beings, we are never satisfied, we are never content, but contentment is a bliss. We need to be content with whatever we are having. And we need to understand the problems of our parents instead of getting angry with them, instead of holding a grudge against them. We should understand that understanding should develop. He had his parents throughout the fair, but his heart desired many things. But the time when he realized the value of his parents, they were lost. He was lost. They were gone. And at that particular point of time, everything came. Everything was served in front of him in a platter, whatever he wanted. But at that time, he did not want anything. So we need to respect what we have. Like during the time, when school was there, we thought of getting a leave. We thought of getting, vacations or holidays, but during this time we want to see each other.
We want to be with our friends. We want to be with, in school and meet up with each other. We want to enjoy. We want to go out. We want to eat in the restaurants, and we need to value what we have. You never know what is there for you tomorrow, and this time you are having, spend with your parents, chat with them, cook with them, have fun with them, enjoy whatever you have, because life is unpredictable. And at this time we can only pray and we can hope that things will get normal soon and we may meet again. So value and respect what you have, and I hope you have understood the story. Any problem, you can comment in the comment section. Stay home, stay safe, God bless.